ट्रैक्टर से इनकम बढ़ा है। खेती का विस्तार भी हुआ है। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ, मुझे धन की लोभ नहीं है, मेरे को तो बच्चों का एजुकेशन सही हो जाए। India's economy is growing fast. But in low-income states like Rajasthan, a lack of access to capital is hindering growth. Farmers, for example, need equipment to make the most of the land they have. But without a bank account or a certified income, it's difficult to raise finance. Lalu Ramjat's life has been transformed by buying a tractor. 35 साल से रह रहे हैं। परिवार में सभी लोग हैं, भाई बहन भी हैं, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, सब हैं। खेती का काम करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं। भाई वैसे पहले हाथों से और जानवरों से जो करते हैं ना, उसकी जगह लोन लेके ट्रैक्टर लिया। ट्रैक्टर से इनकम बढ़ा है, खेती का विस्तार भी हुआ है, तो पूर्ति तो होती है, इनकम भी ज़्यादा हुआ है। Using a tractor, Lalu can produce 3 times the amount of wheat than he produced before. As his income has increased, so has the standard of living for his family. ट्रैक्टर सबसे जो गेहूँ बालगा पहले तो कच्चा खर्चा फिर अब पक्का होगा। His 16-year-old daughter Sunita enjoys the benefits of the family's increased income and goes to a good school. She dreams of opening her own private school one day. कॉलेज नहीं, इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ अभिनव इंटरनेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स कालवा रोड जयपुर। मैं अपनी लाइफ में सेल्फ बिजनेस करना चाहती हूँ, सब कुछ प्राइवेट करना चाहती हूँ। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। The loan to buy the tractor came from AU Financiers, a non-bank finance company. It helps people who can't access loans from traditional sources like banks to buy commercial vehicles so they can run their businesses better. Sanjay Agarwal founded AU Financiers in Jaipur in 1996. Today it has more than 250,000 customers across 8 states, catering for the low-income section of the population. Many of these people don't have bank accounts because of a lack of proper documentation. These customers are very afraid of going to banks or in that kind of environment where they cannot speak or they cannot express themselves. We provide with a localized manpower who understand their local needs, who can speak in their local language. We also understand them why they want the vehicle or why they want a finance, how will they use that finance amount and how will they repay it. So it's a connect which helps, and with a touch and feel you can get the psyche of the customer, or you can get into him. So which is very important to decide the credit. AU Financiers itself has become an important employer and has expanded rapidly. Today it has 3,000 staff. Rachana Anand says job security has allowed her to plan for the future. मैंने 2003 में ये सोच के ज्वाइन किया कि मेरे को सेल्फ डिपेंड होना है, और मैंने उस हिसाब से ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आए। अब जो मेरे को इनकम होती है वो मैं टोटल सेविंग तो नहीं करती, 50% मैं हाउस पे करती हूँ और 50% मैं सेविंग करती हूँ। वो जो सेविंग करती हूँ वो मेरे कॉन्फिडेंस आता है। CDC, the UK's development finance institution, lent $20 million to AU Financiers in 2013. CDC's mission is to support the building of businesses throughout Africa and South Asia to create jobs and make a lasting difference to people's lives in some of the world's poorest places. In India, there is quite a robust banking sector, but the banks are primarily in the large cities. They're looking to serve the more affluent individuals as well as the corporate sector. So you have a whole segment living in rural areas
or people that are sort of at the bottom of the pyramid that aren't able to access that traditional banking sector. And that's where finance companies like AU are able to step in and meet that need. So it was really an ideal partner for us and really dead center in our strategy for India. The impact of loans is not limited to rural areas. Ram Sharma and his family live in Jaipur. He came to the city nearly 40 years ago and has lived in this flat for the last 9 years. With AU Financiers' assistance, he has bought several small commercial vehicles that he rents out. 1666 को फर्स्ट 3 व्हीलर लिया था, उसके बाद में मैंने कुछ इसमें 2 पैसे की इनकम हुई, कुछ प्राप्ति हुई। उसके बाद के अंदर फिर मैंने सोचा कि दूसरी गाड़ी और ले तो उससे 2 पैसे की और प्राप्ति होगी, बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा। 3 लड़कियां और 1 लड़का है, इनको पढ़ाना भी है, इनकी शादियाँ भी करनी है, मेरे पास एनी अदर सोर्स कुछ भी है नहीं। तो ये सोच के मैंने लिया था, मुझे यहाँ से बेनिफिट मिला, मुझे फ़ायदा मिला यहाँ से। By running their own business, the family has transformed their lives. Debts have been paid off, 2 of the 3 daughters are now married, and the son studies engineering at a good college. समय पे बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ गई थी लाइफ, क्योंकि उस समय में हम जो चाहते थे वो हमें मिल नहीं पाता था। और उस समय में कुछ एक टाइम पे ही खाना हो पाता था, दूसरे टाइम पे नहीं हो पाता था, एक ही टाइम पे खाना होता था पूरे दिन में। लाइफ में तो लोग 4 या 5 बार खाते हैं, लेकिन हमारे 1 या 2 टाइम पे होता था। सो बहुत चेंज हो गई थी लाइफ, मतलब बिगड़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे सुधार आने लगा। मतलब ये काम नहीं करते तो मतलब हमारा गुजारा नहीं चल पाता, और ना मैं बच्चों को पाल सकती और ना कुछ कर सकती। Today, the Sharma family has a future, saving 50% of earnings. बिल्कुल मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे मतलब एक अच्छा लगा कि मैंने कुछ किया गरीब परिवार से उठ के। So a lot of customers graduated from 1 vehicle to 4 vehicles, 5 vehicles. They own a house now. Good children going to schools. It gives me happiness that there's an impact of my financing into their lives, and their livelihood is improving, and their families are good. So I feel happy.